Hello friends, welcome to my educational channel GravityTech. In today's video, we will cover third part of mathematical logic chapter. First two parts are already covered and uploaded to the channel in previous two videos. So if you want to go through the basics of mathematical logic, what does it really mean, you can actually go to the channel and go through those two videos, which will basically give you the more idea about what exactly the uh, mathematical logic, fundamental logic used in mathematics, right? And then what are the different uh, operators used. Okay, now this video will basically cover mostly the last part of conceptually last part of the mathematical logic chapter. And the next video will have more about like important questions, MCQs, or maybe a descriptive questions on a mathematical logic chapter, right? So let's go ahead and see what exactly we have here as a part of this session. Okay. So the session objective is what? To know what are the quantifiers, how to use it, and some examples. What are the duals? What is converse? What is inverse? What is contrapositive? What basically is the algebra of the statements? That is, we call it as a logic clause, and some important points to remember about mathematical logic. Right? That will be kind of summary. So let's, before going to the topics of this particular session, let's have a quick recap. What exactly did we do, right? We looked at the basic connectives. Which all basic connectives are there? There is a conjunction, which we call it as and. There is a disjunction, which we call it as or. There is a implication, which is conditional. If P, then Q. There is a double implication. We also see it is biconditional or by implication. That is what P, if and only if Q, right? And there is a negation, right, which basically just negates the existing statement. Then we saw the truth tables, right? Every statement is going to have a truth value that is either true or false, but that truth value basically, now for single statement it can be true or false, but let's say it's a combination of more than one statements, right? That way there will be a compound statement. So in that case you need to basically create the truth tables, right, with all the combinations of possible values of true and false values, right? That is truth tables we saw some logic properties as well, right? And then the logical equivalence too, right? Logical equivalence means when the two compound statements are having a same truth table, they are actually logical equivalence, right? Equivalent statements. Now let's look at what are the quantifiers and quantified statements. Quantifiers see, quantify करना मतलब क्या कि कितना quantity है, right? We talk in terms of quantity, right? Let's say now, there are five glasses, right? पांच glasses है जिसमें मतलब, और आपके पास एक, आप उनमें जूस भरना चाहते हो, बट अगर फाइव के फाइव क्लासेस आर एम्प्टी, राइट, देन व्हाट यू विल से, all the glasses are empty, not a single glass is having a juice in that, right? तो हमने अपने क्वांटिफाई कैसे किया कि सभी ग्लास एम्प्टी है, सभी इस क्वांटिफायर, कितने, सभी, राइट? लेट्स से कि उसमें से एक या दो ग्लास में जूस है, तो आप क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ग्लास विच हैज ए जूस इन इट। मतलब आपने क्वांटिफाई किया कि नहीं, उसमें कम से कम एक ऐसा तो ग्लास है, कम से कम एक ऐसा ग्लास है कि जिसमें ऑलरेडी जूस भरा हुआ है। सो क्वांटिफाई करना मतलब क्या, दो तरीके से आप इसको मैथमेटिकल लॉजिक के इसमें क्वांटिफाई कर सकते हैं। एक तो वहां पे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है, या फिर सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपका वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सो इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट में आपको अगर देयर एग्जिस्ट या फिर फॉर ऑल ऐसा कुछ मिल जाए तो वो होता है क्वांटिफायर। सो दीज आर बेसिकली टू क्वांटिफायर्स, फॉर ऑल एंड there exist. So for all is basically universal quantifier, whereas there exist is what, uh, exist existential quantifier, right? So let's see now what exactly it is. So see now there, let's consider two statements. दो statements लेते हैं हम लोग P and Q. P क्या है, there exists an even prime number in a set of natural numbers.
एंड क्यू क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव. नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट पी. आप अगर यहाँ पे देखोगे, देयर एग्जिस्ट, व्हाट इट इज सेइंग, देयर एग्जिस्ट मतलब ऐसा एक तो एलिमेंट है, ऐसा एक तो एलिमेंट है, कौन सा, इवन प्राइम नंबर. ऐसा एक तो इवन प्राइम नंबर है, किसमें है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3, करेक्ट, देन 4 5 एंड सो ऑन, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, करेक्ट. अभी आप अगर देखोगे, व्हाट दे आर सेइंग कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, बाद में 5 है और 7 होगा, राइट. द प्राइम नंबर विल बी देयर. सो इसमें बाकी के सभी, अगर आप 2 को छोड़ दो तो बाकी के सभी प्राइम नंबर से क्या है, ऑड है. व्हाट दे आर, ऑड, राइट. सो देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर विच इज इवन. तो 2 इज अ सच ए प्राइम नंबर. सो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया, देयर एग्जिस्ट. सो अगर हम यहाँ पे यूज करते कि ऑल, तो सभी के सभी प्राइम नंबर्स इवन है क्या, नहीं. सो इसलिए यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, देयर एग्जिस्ट. और इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं क्वांटिफायर्स किसमें, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट. इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई आप लिखो, उसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एंड इवन नंबर, राइट, एंड इवन नंबर इन अ, और इस पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखना, इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट. ये हो गया, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अगर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है और अगर आपको यहाँ वहां पे ऐसा अगर कुछ दिखता है सिंबल, इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो ऐसा एग्जिस्ट होता है. नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन. दे आर सेइंग ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव. आप अगर देखोगे, जितने नेचुरल नंबर्स है सभी के सभी है क्या, पॉजिटिव है. तो उन्होंने क्या यूज किया है, ऑल, करेक्ट. इसका मतलब, सो दिस इज अ क्वांटिफायर. इसका मतलब ये क्वांटिफायर क्या हो गया, सभी के लिए ट्रू है या फिर सभी के लिए फॉल्स है, राइट. सभी के लिए ये एप्लीकेबल है. सो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. और यूनिवर्सल क्वांटिफायर किस तरह से लिखा जाता है, फॉर ऑल, राइट. नाउ लेट्स मे बी आई शो यू हाउ टू राइट इट, राइट. सो फॉर ऑल लिखा जाता है इस तरीके से, फॉर ऑल लिखा जाता है इस तरीके से. सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट. देखिए, अभी इसी स्टेटमेंट को मैंने इस तरह से लिख दिया. तो आपको मैंने यहाँ पे क्वांटिफायर यूज किया. क्वांटिफायर क्या है, एग्जिस्टेंशियल है, यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, सबके लिए ट्रू है, राइट. सो दीज आर द टू क्वांटिफायर्स. कौन कौन से क्वांटिफायर है, एक तो होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब वहां पे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए आपका आगे का पूरा कंडीशन ट्रू होता है. और दूसरा होता है फॉर ऑल. फॉर ऑल को क्या बोलते हैं, दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आर द टू क्वांटिफायर्स which are there, and then these are called as a quantified statements. इनको क्या बोलते हैं, quantified statements बोलते हैं, right. Now let's see what we have in the slide. Yeah, so see, so there exist and all, these are the quantifiers. So words there exist and for all are basically the quantifiers जो हमने अभी देखा है, right. So there exist को क्या बोला जाता है, there exist is an existential quantifier और उसको डिनोट किया जाता है उल्टे ई से, रिवर्स्ड, right, e. So if you look at in the statement p is basically the collection of what, set of numbers. ये किसका कलेक्शन है, सेट ऑफ नंबर्स. और उसमें कम से कम एक कंडीशन जो है, एन इवन प्राइम नंबर है, एग्जिस्ट होती है, मतलब एटलीस्ट देयर इज वन सच एन एलिमेंट इज देयर, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज देयर एग्जिस्ट. सो स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय existential quantifier, right, is true if at least one object in the collection is the what, condition, right. Next, now for all को क्या बोला जाता है, it's basically the universal quantifier and it is denoted by a reverse a. Okay, a statement quantified by universal quantifier is true for all objects in the collection
which satisfies the condition. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कलेक्शन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कंडीशन क्या है, पॉजिटिव, और क्या है, सभी के सभी नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है वो पॉजिटिव है. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, यूनिवर्सल. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स नाउ. वहां पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 7. एक ए सेट है, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है. नाउ डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है देखते हैं. सी, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट दे आर सेइंग. इसको रीड कैसे करना है. देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट x in a. So there exists x in a such that x minus 4 is equal to 3. So a में ऐसा कोई तो एलिमेंट है कि x minus 4 क्या होता है, 3 होता है. So इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर आप x का वैल्यू 1 लो, राइट, तो 1 minus 4 क्या आएगा, -3 आता है क्या, नहीं 3. 2 minus 4 -2, राइट. 3 minus 4 -1, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3. See now, अगर x is equal to 7 के लिए this becomes true, correct. So x is equal to 7 is the element which basically holds this. इसको आप solve भी कर सकते हो. See, if you solve it, right, x minus 4 is equal to what, 3. तो x is equal to क्या आ गया, 3 plus 4, right. So, and you can just check कि ये एलिमेंट उसमें है या नहीं है. अगर है तो this is true because there exists, right. अगर नहीं है तो it is not true. So a 7 is there, so the truth value of this will be what, basically true, right. So this is gonna be a true. See, right, let's see the next. See, now the next one is saying the for all. See, if you look at this, for all x in a, x ए में सभी x हर एक के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, for all of these elements in a, x plus 1 is greater than equal to 3. Is it true? So let's take x is equal to 1 first. So 1 plus 1, right, 1 plus 1, right, is equal to how much, 2. And what condition they have, greater than or equal to 3. So 2 is greater than equal to 3. Is it true? No. So that means this particular statement is false, right? For all x is equal to a, this is not true. So this will be what, false. Yeah. Next, now they're saying for all x belongs to a, x, for all x belongs to a, right? 8 minus x is less than equal to 7. सभी एलिमेंट्स के लिए x minus 8, 8 minus x क्या है, लेस देन इक्वल टू 7. इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखो अभी यहाँ पे 7 एलिमेंट्स, इसलिए आप एक एलिमेंट्स ले सकते हो. लेकिन अगर वहां पे 1000 ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो आप थाउजेंड्स के लिए टेस्ट कर सकोगे क्या, रादर देन आप इसको सॉल्व कर लो. सो दिस विल बी व्हाट, 8 minus 7 लेस देन इक्वल टू व्हाट, x, राइट. x यहाँ इधर चला जाएगा और x यहाँ आ जाएगा. सो 8 minus 7 is what, 1. So 1 is what, greater than equal to x. Now is this true for all? Yes. x की वैल्यू ये क्या, एक से बड़ी है सब जगह पे, करेक्ट. सो दैट मीन्स दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए ट्रू है. इसलिए ये पूरा जो स्टेटमेंट है, राइट, ये पूरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. अंडरस्टूड. ओके, सो this would be true, right. Now let's look at next. They are saying there exist a. So now they are saying there exist x in a. इसमें ऐसा एक तो एलिमेंट है सच दैट x plus 8 is equal to 16. इसको सॉल्व करके देखते हैं. x plus 8 is equal to what, 16, correct. Now if you look at here, if you try to solve this, x is equal to what, 16 minus 8, which will be 8. x की वैल्यू क्या आती, 8. is the x is there, no. that means there does not exist a single element. इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता है. what does that mean, this is not true. ये क्या हो गया, false है, right. so we saw what exactly it is, like existential and the universal one, right. So this is how you basically need to deal with the quantifiers and the quantified statements.
इनको बोलते हैं quantified statements, and then these are the quantifiers. They exist and for all, and these are the true values. How do you find out basically the true values of the quantified statements? Next, duals. See, now what are the duals? अगर आपको कोई भी अगर, let's first understand कि duals मतलब क्या, right? अगर आपको कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया है लॉजिकल स्टेटमेंट, तो वहां पे एंड अगर है तो उसको रिप्लेस करो, सॉरी, और अगर है तो उसको रिप्लेस करो एंड से, अगर एंड है तो उसको रिप्लेस करो और से, अगर वहां पे टी है, टी मतलब क्या, टोटोलॉजी, राइट, उसको रिप्लेस करो सी से, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर सी है, सी को रिप्लेस करो टी से, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी से रिप्लेस करो। ये चार रूल्स आपको ध्यान में रखने जब भी आप डुएल्स के साथ काम करो, करेक्ट? So this is the very simple thing. That is what we call it as a dual, right? So what is that dual means? The dual means if the two statements contain logical connectives or and, that is what disjunction and conjunction, and the letters T and C, where T is what tautology, C is what contradiction, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from other by interchanging or with and with or, and then T with C and C with T. Let's take an example. अभी यहाँ पे देखिए आप, जो if you look at here, right, this is a statement P or Q. Now this is a P or Q. यहाँ पे क्या है, और है. Now this is a dual of that. ये उसका क्या है, dual है. इसमें dual में क्या किया, जस्ट इसको रिप्लेस कर दिया and से, and then done, right? That's what the rule says. Okay. So similarly, if you look at next, right, see, T tautology, right, और P, इसका जो है डुअल क्या आएगा, सी द रूल इज व्हाट, टी को सी से रिप्लेस करो, और को एंड से रिप्लेस करो, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रखो. सो टी और पी विल बी व्हाट, सी एंड पी विल बी द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट, टी एंड पी, सो टी को सी से रिप्लेस करो, एंड को और से रिप्लेस करो, एंड दैट विल बी व्हाट, सो सी और पी विल बी अ डुअल ऑफ टी एंड पी. Now let's see some examples. Write the duals of each of the following. Right. So these are kind of examples we have. Right. Let's maybe look at the examples. अभी ये देखो. This the first example is what, P and Q और R. तो यहाँ पे बाकी सब कुछ ऐसे ही रखना है. P ऐसे ही रखना है. And है तो and को रिप्लेस करो और से. Right. See. And को रिप्लेस किया और से. Then Q as it is. Right. And then bracket complete. Then और है, और को रिप्लेस करो and से. Right, and then this R will become as it is. Correct. This is the dual of this. Now what will be the dual of this? यहाँ पे T दिख रहा है, so T को रिप्लेस करो C से, right? Then और को रिप्लेस करो and से, bracket P as it is, right? Then और को रिप्लेस करो and से, right? And then Q as it is. Correct. So इस तरीके से. Now let's look at this one. This is the pretty, not the complex, but yes. See now यहाँ पे P ऐसे ही रखना है, इसको और कर देना है, इसको एंड कर देना है, इसको और कर देना है, और इसको एंड कर देना है, नथिंग. बाकी पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही रखना है. यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एंड कर दोगे, इसको और कर दोगे, इस टी को सी बना दोगे. करेक्ट. यहाँ पे आप इसको एंड, दिस विल ऑल्सो बिकम एंड, दिस विल बिकम एंड, दिस विल बिकम एंड. करेक्ट. नाउ दिस विल बिकम और, दिस विल बिकम और. बाकी स्टेटमेंट्स आपको ऐसे कैसे रखने हैं, राइट? दिस विल बिकम और, दिस विल बिकम सी, इसको टी को सी बनाना है, और को एंड बनाना है, राइट? सी को टी बनाना है, दिस एंड विल बिकम और, एंड बाकी एज इट इज. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज, राइट? सी, सो फर्स्ट इज व्हाट, P and Q और R, so P और Q and R, right? T को C बना दिया, और को and, P and Q as it is, और को फिर से and बना दिया.
P negation of Q, P Q negation of R as it is रखा है. Just or and becomes or and or becomes right? P Q as it is or becomes and becomes or in the contradiction, right? P or Q or R और को सब जगह पे and replace कर दिया, right? So this is what actually we discussed. So this is how we can find out the dual. Okay, next, what are the negations? सी अभी निगेशन हमने सिंगल स्टेटमेंट का देखा है. सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट? सिंगल स्टेटमेंट का निगेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? लेट्स से दिस वे, राइट? सो निगेशन ऑफ पी, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो पी का निगेशन पी आएगा. लेकिन व्हाट इफ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपको निकालना है, राइट? कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब सबसे पहले लेट्स से पी एंड क्यू लेते हैं हम लोग, राइट? पी एंड क्यू, अगर आपको इसका निगेशन निकालना है, निगेशन ऑफ द कंजंक्शन, तो आप इसको कैसे निकालोगे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डी मॉर्गन्स लॉ. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो निगेशन है, निगेशन विल गो इनसाइड. सो निगेशन ऑफ, यू विल बेसिकली हैव निगेशन ऑफ पी, ओके, निगेशन ऑफ पी इस तरीके से, एंड देन जो एंड है उसको क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, एंड देन निगेशन ऑफ क्यू. ओके, दिस इज हाउ वी बेसिकली हैव अ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब कंजंक्शन का. उसी तरीके से निगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी निकाल सकते हैं, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन. अभी देखते हैं हम लोग वैसे हाउ डू वी बेसिकली डू दैट. या नेक्स्ट, so the idea here is to find out negation of conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of biconditional. Let's go ahead with first. So negation of conjunction, P conjunction Q, मतलब P और Q, इसका negation क्या आता है? negation of P and Q, उसका negation क्या आता है? Basically negation of P और negation of Q, right? ये negation दोनों का हो जाएगा, right? So let's look at how it is. So let's say the negation of 6 is even and perfect number. अभी यहाँ पे P क्या है? 6 is even number, right? 6 is even number is a P, correct? And then what is Q? Q is what? 6 is a perfect number. 6 is even number is P. This is P. And then 6 is a perfect number is what? Q. अभी हमको इसको निगेट करना है, और this is and. This is what? And. P and Q ऐसा है. तो अभी हमको इसको अगर निगेट करना है तो व्हाट, हाउ वी विल डू? निगेशन ऑफ पी पहले लिखो एंड देन निगेशन ऑफ क्यू और. सो मतलब 6 इज नॉट इवन और नॉट अ परफेक्ट नंबर, करेक्ट? मतलब इसको नॉट बना दो, 6 इज नॉट इवन, एंड को बना दो और, एंड इसको भी नॉट बना दो, नॉट परफेक्ट नंबर, करेक्ट? सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन डू यूजिंग दिस लॉ. सो it will be 6 is not even or not a perfect number, is it? So next is what? Negation of disjunction. जैसे conjunction का negation होता है, similarly negation of disjunction is there, right? What you basically need to do, the negation of P or Q is what? Negation of P and negation of Q. तो correct? So this becomes and यहाँ पे, और this becomes और यहाँ पे, right? These are called as the De Morgan's law. इनको क्या बोला जाता है? De Morgan's law. So let's take an example. Now here the disjunction statement is what? The compound statement is what? X is prime or X is even. So X is prime or Y is even. मतलब क्या? This is what? P. This is your or, and Y is even is what? Q. अभी हमको इसका negation बनाना है. We want basically negation of this, correct? So how do we do that? We will say, since it is or, so we will say first negation of P. मतलब X is not a prime, ये हो गया negation of P, correct? And then we will say and को और बना देंगे. So this is and then Y is not even, correct? So this will be what? Negation of Q. So this is how basically you negate a disjunction. Understood? So the negation of X is prime or Y is even is going to be what? X is not a prime,
and y is not even. Okay, so remember these are the De Morgan's law. ये आपको directly examples में use भी करने हैं. जब आपको examples आएंगे without using truth tables, prove that the logical equivalence, तो ऐसे statements में, ऐसे examples में आपको ये वाले directly use करने हैं. ये MCQs में भी आ सकते हैं. Right, let's see now. So negation of implication. P if P then Q अगर है, if P then Q अगर है, उसका negation कैसे आता है? So P and negation of Q. Remember. So negation of if P then Q is what? P and negation of Q. So let's take an example. If bakery is open, then I will buy a cake for you. If bakery is open, then I will buy a cake for you. तो यहाँ पे bakery is open जो है, this is P, and then I will buy a cake for you is Q. मतलब if P then Q. अब इसका negation करना है, मतलब you need to have a P as it is, and then and negation of Q. So the bakery was not open. The bakery was open. The bakery was open. इसको negate नहीं करना है. So bakery was open and I did not buy a cake for you. मतलब मैंने आपके लिए केक नहीं लिया. तो Q को negate करना है, P as it is रखना है, उसको and बनाना है. See, so the bakery was open and I did not buy a cake for you, right? यहाँ पे open word नहीं है, नहीं, so this open is word is actually missing, right? So the bakery was open and I did not buy a cake for you. This is how the negation of implication is. So remember, negation of if P implied Q is what? P and negation of Q. Now negation of biconditional. Negation of biconditional means what? P if and only if Q. इसे read किया जाता है P if and only if Q. Okay. So see. Now basically P if and only if Q का मतलब क्या होता है? If you look at, right, so it is basically P if P then Q and if Q then P. इस तरीके से होता है. So it is basically like this. When we say like this, P double implies Q is equal to, right? So it will be what? P implies Q. थोड़ा slow है, right? P implies Q and Q implies P. ऐसे होता है. Because if and only if का मतलब क्या होता है? It is true both ways. If P then Q, if Q then P. दोनों तरीके से होता है, right? The converse is also true. So this is how it is. और अगर हमको इसको negate करना है, negation of this will be what? Negation of this whole thing. Correct. Now by De Morgan's laws, ये जो De Morgan law है, right? So that will be what? Negation of this and will become or, and the negation of this, right? So ये जो और दिख रहा है आपको बीच में, that's the or. Now negation of P then Q हमें पता है, P and negation of Q. So P and negation of Q. So similarly when we say Q then P, right, then it will be what? Q implies P का negation क्या रहेगा? Q and a negation of P. So this is how basically it is. You can prove it. Yeah. So remember, negation of P if and only if Q, मतलब double implies Q is what? P and negation of Q, or Q and negation of P. Right. Let's take an example. The number is an even number if and only if it is divisible by 2. तो मतलब क्या बोल रहे हो कि नंबर इवन नंबर है, इफ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2. मतलब अगर नंबर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. हम अदर वे भी बोल सकते हैं, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, राइट? सो हमने दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं कि इफ नंबर इज इवन नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 2. अदर वे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज एन इवन नंबर. सो इसका निगेशन कैसे आएगा? सो पी इज व्हाट? द नंबर इज एन इवन नंबर and it is divisible by 2, right? So the negation will be what? P is even number, so P and negation of Q. So a number is even but not divisible by 2, right? ये हो गया, right? And यहाँ पे और है, so or a number is divisible by 2, that is Q, but not even number, right? So this is how
the negation of biconditional will be. So these are the laws. These are the laws which you will have to use in examples directly. So remember, right? Negation of conjunction, disjunction, implication, biconditional. Let's look at next. What is converse, inverse, and contrapositive? Now, converse, inverse, and contrapositive, these are only found for implication स्टेटमेंट. जो implication स्टेटमेंट if then का जब स्टेटमेंट रहेगा तभी ये कन्वर्स इनवर्स एंड contrapositive स्टेटमेंट निकालते हैं, right? We basically find it. So see, the for implication P implies Q, we can obtain three implications. Converse निकाल सकते हैं इसका, inverse निकाल सकते हैं और contrapositive. Now see, Q implies P is basically converse of P implies Q. So remember, see, यहाँ पे तीनों अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, these are kind of like P implies Q, P implies Q and P implies Q. P implies Q का कन्वर्स, कन्वर्स मतलब क्या है, जस्ट उसको उल्टा कर दो, Q देन P, Q implies P. इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या है, इन दोनों का निगेशन कर दो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. एंड कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या, इसका इनवर्स लेके फिर उसका कन्वर्स करो, राइट? सी, फर्स्ट टेक द इनवर्स एंड देन द कन्वर्स, और राइट, take the converse and then inverse. So it's basically contrapositive is basically combination of converse and inverse. So remember, P implies Q का जो converse होता है, it is Q implies P. Inverse होता है negation of P implies negation of Q, and जो contrapositive होता है, negation of Q implies negation of Q, negation of P, right? So this is how it is. Very simple thing. Let's see now. Write the converse, inverse, and contrapositive of the following statements. First statement है, if a function is differentiable, then it is continuous. Right? See, if a function is differentiable, then it is continuous. This is the example. तो यहाँ पे a function is differentiable, ये क्या हो गया, P. This is your P, correct? And this is your what, Q. It is continuous. And since यहाँ पे if or then use कर रहे हम लोग, if then, so this is what, implication. अभी इसको हमको contrapositive निकालना है, सॉरी, contrapositive, inverse and converse. So let's first concentrate on converse. Converse क्या होता है, Q then P. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a function is continuous. If a function is continuous, then it is differentiable. Correct. Inverse क्या आएगा, if a function is not differentiable, then it is not continuous. इसको not कर देना है दोनों को खाली बस. Contrapositive क्या आएगा, negation of Q, negation of P. So negation of P will be what, a function, if a function is not continuous, then it is not differentiable, right? Just आपको P क्या है, Q क्या है निकाल के, you just need to maybe put the values here, right? See, so if you look at here, let's say P is what, a function is differentiable, Q is what, a function is continuous. Given statement is what, P implies Q. So converse क्या आएगा, Q implies P आता है. So Q is what, a function is continuous. If function is continuous, then it is differentiable. Inverse क्या आएगा, negation of P and negation of Q. Negation of P, P क्या है, a function is differentiable. So negation क्या आएगा, if a function is not differentiable. Negation of Q, Q का negation क्या आएगा, a function is not continuous. So then it is not continuous, right? It's contrapositive. Contrapositive मतलब क्या, negation of Q then negation of Q. So if negation of Q is what, if a function is not continuous, then a function is not differentiable. Easy. So this is how you basically can find out the converse, inverse, and contrapositive of the statements. Remember. So converse is again Q implies P, inverse is negation of P implies negation of Q, contrapositive is negation of Q implies negation of P. Let's look at algebra of logical statements. Now these are the rules. These are the rules, algebra of rules, right? Logical laws, which you need to use when you are maybe solving examples which basically require proving without maybe truth tables. तो ये वाले जो रूल्स है आपको यूज करने हैं डायरेक्टली आपके एग्जांपल्स में, जब भी आपको ऐसा एग्जांपल आएगा कि prove it without truth table, right? So see, first is idempotent law. Idempotent law मतलब क्या, that operation has to be done with the self. खुद से ऑपरेशन किया है, right? So P
and P will be always P, and P or P will always be P. So that these are called as idempotent law. मतलब an operation with the self. Next is commutative law. Commutative मतलब क्रम निरपेक्ष. What does it mean by? So order really doesn't matter. A and B will be or B and B, right? Just think of a multiplication. If you multiply 2 into 3, आप अगर 2 into 3 करोगे और 3 into 2 करोगे, आपको 6 ही मिलने वाला है. So similarly, this is the commutative law. Commutative law means what? P or Q is equal to what? Q or P. P and Q will be equal to Q and P, right? Associative law. Associative law मतलब क्या है कि let's say there are three different statements given are to you, right? And they are maybe connected with the same kind of logical connective. तो let's take an example. अब 2 plus 3 plus 5 है. आप 2 plus 3 पहले करो, उसमें फिर 5 ऐड करो, या फिर 3 plus 5 पहले ऐड करो और उसमें फिर 2 ऐड करो. Is there going to be any difference in answer? No. So that means that is associative law. आप किसी साइड से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर सेम आएगा. सो लेट्स सी P एंड Q एंड R. तो यहाँ पे Q एंड R पहले किया और उसके बाद इफ यू से P एंड दैट आंसर, it will be same as P and Q and then R, or any order P and Q and R, right? Similarly अगर और है तो और के लिए भी आप order doesn't matter, P और Q और R. आप पहले P और Q कर सकते हो और बाद में उसके साथ you can say or Q or R, right? So these are called as associative laws. So either you can go by this side or either you can go by this side. The answer will be same. Now the distributive law. See associative law में भी यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी तीन स्टेटमेंट्स है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज समहाउ डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज उसमें दो डिफरेंट ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है. यहाँ पे एंड एंड और है, और एंड है, लेकिन यहाँ पे एंड और सेम था. सो जहाँ पे सेम ऑपरेटर्स है, कनेक्टिव्स है, यूज एसोसिएटिव लॉ. जहाँ पे डिफरेंट है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? पी दिस एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर or will be distributed over and, right? So for example, if you just take an example like C, like this, okay, 2 into 3 plus 5, right? 2 into 3 plus 5, let's say, right? 3 plus 5. Let's say this is how maybe the same thing you can just assume, right? Distributive law हम पहले इस पे करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? First we will say 2 into 3, right? And then we will say plus 2 into 5, correct? That's how it will be, इस तरीके से. So मतलब what basically we did, ये जो multiplication sign था इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किस पे? ओवर प्लस पे. So similarly here when you say P and Q or R, you need to basically say P and Q or P and R. So you are basically distributing this and sign and connective over or connective. Similarly, P or Q and R will basically be like P or Q and P or R, right? So you are, this is what the distributive law is. The next, De Morgan's law. ये भी हम लोगों ने देखा, negations, right? Negation of P and Q will be equal to what? Negation of P or negation of Q. Negation of P or Q is equal to what? Negation of P and negation of Q. Just last slide में हमने अब देखा है. Identity laws. Identity laws मतलब operations with ट्रू एंड फॉल्स सो दैट कि आंसर वही आए, राइट? आप अगर लेट्स से आप किसी भी नंबर में जीरो अगर प्लस करते हो तो आपको क्या आंसर आता है? 2 प्लस 0 2, 1 लाख प्लस 0 1 लाख, राइट? -1 प्लस 0 -1. मतलब जीरो क्या है? ऐसी आइडेंटिटी है प्लस के लिए कि आप वो अगर किसी के साथ भी अगर प्लस कर दो तो आपको वही आंसर आएगा. सो सिमिलरली देयर आर टू आइडेंटिटीज, एक एंड के लिए होती है और एक और के लिए. अगर आप किसी का भी एंड टी के साथ करो तो आपको वही आंसर आएगा, राइट? पी एंड टी विल बी इक्वल टू व्हाट? पी. एंड पी एंड एफ विल बी इक्वल टू व्हाट? Similarly,
P or F will be equal to P and P or T will be equal to T. Okay, so these are the identity laws. What are the complement laws? So when you perform disjunction or conjunction with that statement and its complement, you get either false or true. So P and negation of P will be F, that will be false always, because एक अगर true है तो दूसरा false आएगा, दूसरा true, पहला अगर false है तो दूसरा true आएगा. So one of them will be false, answer will be false. P or negation of P will be T, because अगर एक true है तो दूसरा false है. So at least one will be T, so answer is what? T. So these are the complement laws. Okay. Now what are the absorption laws? Absorption law means other statement is actually gets absorbed in the first one. Let's now P or P and Q. Now यहाँ पे Q क्या हो जाता है? Absorb हो जाता है. तो आंसर आता है directly P. Right. Similarly, P and P or Q will basically be P. Right. So this or and or इसमें Q क्या हो जाता है? Absorb हो जाता है and the answer gets is basically P. ये सभी आपको actual examples में directly use करने हैं. Now conditional law. This we have already seen, right? P implies Q क्या होता है? Negation of P or Q. Then biconditional law is what? P double implies Q will be what? P implies Q and Q implies P. That means by using this, negation of P or Q and negation of Q or P, right? These are the algebra of logical statements. Now let's see some proofs where we can apply those rules. अभी हम लेकिन जो rules देखे वो apply करें, right? See now what they are saying, without using truth table, prove that. हमको ये prove करना है. So double implies Q को, this is what we need to prove, right? Now let's take an LHS. We know that P double implies Q का मतलब क्या होता है? P implies Q and Q implies P. The last वाला formula from the last slide. So by conditional law, P implies Q. The second last law जो था, negation of P or negation of Q and negation of Q or negation of P. Now see, I think अभी हमको यहाँ पे negation चाहिए, negation बाहर चाहिए, right? So see, what you can basically do, right? You can just De Morgan law use करो. यहाँ पे you need to basically use De Morgan's law. What are the De Morgan laws, right? अगर इसको negation बाहर निकालना है, right? If we want to basically take negation out, and का क्या हो जाएगा? और का हो जाएगा and. De Morgan law में and basically becomes or, right? And or becomes and. तो यहाँ पे अगर or है तो यहाँ पे and हो गया, देखो, right? Now when you want to take this negation bhar, right? So you basically can take negation out and this negation P will be as it is क्योंकि इसका negation आएगा and then Q का negation, that will be negation of Q. Similarly यहाँ पे negation बाहर गया तो यहाँ पे negation of Q का negation, that is Q and negation of P, and that's what actually they were looking out for the answer. तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन फॉर्मूले यूज किए जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे. दिस वाज द वन, राइट? देन वी use this and then we use the De Morgan laws, right? Remember, so that's how you need to basically start using in your examples. Okay, the next example, they are saying negation of P or Q or negation of P and Q is what? Negation of P. Now let's use that, right? So De Morgan law, very first thing, right? Negation of P or Q, LHS, right? At left hand side लेते हैं, negation of P and negation of Q, right? Negation of P and negation of Q. Then or will become or as it is, right? And then negation of P and Q as it is. हमने De Morgan's law खाली कहाँ पे use किया है? We only use De Morgan's law on this negation of P or negation of Q पे. We only used it on this. बाकी हम लोगों ने सब लोग ऐसे कैसे रखा है, right? Now if you look at here, right, this and this is there, right? And then there is a negation of P and negation of P. तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या रहेगा? दैट विल बेसिकली गिव यू negation of P, right, and negation of Q and negation of Q और P. करेक्ट, इस तरीके से रहेगा. Now let's see how it will be. Yeah, so see,
So by distributive law, negation of P बाहर आ गया. This will be and negation of P or negation of Q. Now, see, negation of Q or negation of Q. This is what? A complement law. Complement law says if it is or and complement and the self, it is going to be T. Correct? That's the complement law. Now, by using identity law, negation of P and T will be negation of P. See, यहाँ पे हम लोगों ने 4 laws use किए हैं by from the last slide. That was the one. Now, what is the summary of the complete chapter? Right, very first thing, a declarative statement which is either true or false but not simultaneously is called as a statement, right? ऐसा assertive statement कि जिसका वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स है लेकिन दोनों नहीं होते उसको बोलते हैं स्टेटमेंट. नाउ व्हाट आर द बेसिकली कनेक्टिव्स? एंड के लिए हम पी एंड की यूज करते हैं, उसे कंजक्शन भी बोला जाता है. एंड उसका हिंट क्या है ट्रूथ टेबल के लिए? अगर दोनों टी है तो टी, राइट. उसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू. अगर और है कनेक्टिव तो उसको डिनोट किया जाता है पी और क्यू से, उसे बोला जाता है डिसजंक्शन. और उसका हिंट क्या है? अगर दोनों एफ तो एफ, ट्रूथ टेबल के लिए, राइट. और उसका निगेशन बाय डी मॉर्गन्स लॉ इट विल बी व्हाट? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. थर्ड कनेक्टिव है इफ देन, जिसे कंडीशनल बोला जाता है. दैट इज कंडीशनल. पी इंप्लाइज क्यू भी उसे रीड करते हैं. उसका रूल क्या है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए? टी एफ को एफ, बाकी सब जगह पे टू टी. एंड negation of it will be what? P and negation of Q. The fourth is what? If and only if, that is P double implies Q, और इस biconditional भी बोला जाता है. What are the rules for the truth table? दोनों अगर सेम है तो ट्रू आता है, टी टी एफ एफ के लिए टी, अदरवाइज अगर दोनों डिफरेंट है तो एफ आएगा. What is the negation of that? P and negation of Q or Q and negation of P. In the truth table of the statement pattern, if all the values of the last column are true, T, then what it is called as a tautology. उसको small t से भी डिनोट किया जाता है. अगर सभी false है, F है, तो it is contradiction, right? अगर वो tautology भी नहीं है, contradiction भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं contingency. Now the symbol ulta A, right? That basically stands for what? For all or for every. It is called as a universal quantifier. The other symbol, the reverse E, basically stands for some, for one, or there exists at least one. It is called as a existential quantifier, right? Now, these are the algebra of statements which we saw: idempotent law, communicative law, commutative law, associative laws, distributive laws, De Morgan laws, identity laws, complement laws, absorption laws, conditional laws, and biconditional laws, right? Now, what are you going to cover in the next topic? Important MCQs of the logic topic, logic chapter, then some descriptive sums, right? Then we will quickly have the introduction about sets, relations, functions. So that's what the agenda of next topic. So that's what actually I had it from this video. So guys, if you find the contents useful, do click on the like button of this video, subscribe to the channel so that you get updates about the all new videos, notifications about the all new videos, and share it with other needy students as well, so that it will help other students to clear their concepts too. Yeah, I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.